294, 454, 323, 506, 325, 325, 354, 354, 376, 300। कोई ऑफेंस छोड़ा ही नहीं ऐसा लगता है। आप या तो ये कंसेंट का ग्राउंड लेते हो, आपकी कंप्लेंट बेकार हो जाती है, और अगर कंप्लेंट को रिलाई करते हो तो कंसेंट बेकार हो जाती है। सो यू हैव टू चूज बिटवीन वन, वेदर इट इज अ फॉल्स केस और इट इज अ कंसेंट। को कितनी बार कहा है कि ऐसे केस में पारिवारिक इज्जत भी इन्वॉल्व रहती है, आदमी 1000 बार सोचता है। देखिए 375 का जो डेफिनेशन चेंज हुई है ना, उसके हिसाब से तो एलिगेशन 376 के बनते हैं। 294, 454, 323, 506, 325, 325, 354, 354, 376, 300। कोई ऑफेंस छोड़ा ही नहीं ऐसा लगता है सर। Initial FIR lodged on 454 to 94 323 506 my lord. Annexure 1 page 7. Thereafter file challan. Another offense already mentioned my lord. Following this, kindly see FIR my lord at 164 statement my lord. मेरे घर से निकल के बाड़ी तरफ भाग रहा था, तो मेरे घर क्यों गए थे, तो मुझे ये गाली गलौज की, ये किया वो किया। अच्छा, चार्जशीट अब क्या फाइल हो गई? चार्जशीट फाइल हो गई 376 और नेचुरल है, अपने बच्चे के लिए उसने छुपाया होगा, अपने प्रेस्टीज के लिए। फिर उसके बयानों में आया, तो वो प्रोसिक्यूटर्स का बयान क्या है सर? 164 देख लें सर, पेज। प्रोसिक्यूटर्स का 161 देखेंगे पहले सर। MLC में भी कोई इंजरी नहीं, उससे कुछ नहीं आता सर। आप तो प्रोसिक्यूटर्स का बस मुझे बता दीजिए पेज नंबर कौन सा, बाकी अपन पढ़ेंगे नहीं सर। पेज 44 सर। प्रोसिक्यूटर्स का 161 का बयान कहाँ है सर? पेज 44। माय लॉर्ड। अच्छा, सर जो आपका डिफेंस है वो फाइंडिंग हम कैसे दे पाएंगे? मैं समझ गया आपका डिफेंस क्या है। इसके पहले पेज 51 में हमने रिटन कंप्लेंट की थी। क्या है? पेज 51 माय लॉर्ड। क्या की थी सर? हस्बैंड ऑफ प्रॉस्टिट्यूट जो है शराब पी के डेली गाली गलौज करते थे, आजू बाजू रहते हैं। कोई बात नहीं। अब सर इससे क्या होगा सर? 2021 की आपने कोई कंप्लेंट की थी, 13/11/21। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप या तो ये कंसेंट का ग्राउंड लेते हो, आपकी कंप्लेंट बेकार हो जाती है, और अगर कंप्लेंट को रिलाई करते हो तो कंसेंट बेकार हो जाती है, और कंसेंट का ग्राउंड लेते हो तो जो प्रोसिक्यूटर्स के बयान के हिसाब से आपके इम्प्रेशन की फाइंडिंग मैं कैसे दे सकता हूं बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के? आई कैन अंडरस्टैंड। So you have to choose between one, whether it is a false case or it is a consent case. False case, my lord. False case. So let us forget about the consent. Now, false case, can I decide that it is a false case under 482? As per FIR, no single allegation of। मेरे भाई, महिला, देखिए सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कहा है कि ऐसे केस में पारिवारिक इज्जत भी इन्वॉल्व रहती है, आदमी 1000 बार सोचता है। समाज में भी वो बेइज्जती होती है, इसलिए कई बार वो देर हो जाती है। तो उसने महिला के साथ क्या हो रहा, उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, उसने नहीं लिखा है, परंतु उसकी पत्नी ने बयान में तो कहा है। और सेकंड FIR में नहीं है कि मेरे साथ दोबारा घटना हुई, ऐसा भी कहना नहीं है। हैं? फर्स्ट FIR में जो है
बाकी चीजों के बारे में कुछ नहीं बोला। ऐसा भी नहीं है कि दूसरी घटना हुई इनने आके तो कोई बात नहीं ना, तो वो अगर एक FIR के दौरान पता चलता है कि और भी अपराध हुए हैं। और MLC भी देखें, MLC में नो सिंगल इंजरी आप पढ़ क्या हुआ? आपको बयान तो पढ़ा ना आपने, क्या लिखा है उसमें? कुछ भी नहीं। कहाँ से चोट आ जाएगी सर? देखिए 375 का जो डेफिनेशन चेंज हुई है ना, उसके हिसाब से तो एलिगेशन 376 के बनते हैं। देख लें जैसा देख लें जैसा भी देख लें, अभी लिखा देते, देखना क्या है सर। 30940/2022 श्री जेल सोनी श्री केस Bagel. This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the applicant that the complainant had initially lodged a report that when he came back to his house, then he found that the applicant was running away after coming out of his house. Police stuff. A day prior thereto, the applicant had also, the complainant had lodged a report that on 12/11/2021 at about 2:45 p.m. when he came back to his house, then he found that the applicant, after coming out from his house, was running away, and accordingly on 13/11/2021 he scolded the applicant as to why he had visited his house. Then he was abused filthily in the name of mother and sister by the applicant, and also started assaulting him after picking a lathi lying on the spot. The incident was intervened by Shubham Srivastava, Abhishek Gupta, and thereafter the applicant went away after extending the threat to his life. It is submitted that thereafter the statements of the witnesses were recorded, and on the basis of the statement made by the wife of the applicant, the offense under sections, the other offenses were registered. Police. It is submitted that the allegations are completely false. The applicant had made a complaint to the police alleging that the complainant, under the influence of liquor, is in habit of abusing him. Thus, it is submitted that the complaint is a product of malafide intention on the part of the complainant. सर वो आपकी कंप्लेंट कहाँ है सर? ये पेज 51 में सर. Consider the submissions made by counsel for the applicant. The applicant has filed a copy of the complaint purportedly sent by made by him to the SHO police station Jai Singh Nagar district schedule on 12/11/2021 itself. And according to the FIR, the applicant was seen coming out of the house of the complainant on 10/11/2021. Thus, it is not the case of the applicant that prior to 12/11/2021 he had ever made any complaint about the conduct of the complainant. If the allegations made in the FIR are correct, then it can be held that the making of a written complaint to the SHO police station Jai Singh Nagar district schedule was an afterthought with a clear intention to create a false defense, be that whatever it may be. This court, in exercise of power under section 482 of CRPC, cannot adjudicate upon the correctness and reliability of the statements of the witnesses. This court is required to decide
Now, this court can quash the FIR only if the uncontroverted allegations do not make out an offense. Full stop. Whether the written complaint made by the complainant is correct or not cannot be adjudicated by this court, and the same can be done by the trial court only. So far as the malafide of the complainant are concerned, the Supreme Court in the case of Renu Kumari versus so-and-so has held as under. Thus, once the complaint discloses the cognizable offense, then the malafide of the informant becomes secondary in nature. Furthermore, in this case, whether the complaint was FIR was lodged out of malafide or not is yet to be decided by is yet to be proved by the applicant. Accordingly, no case is made out warranting interference. The application fails and is hereby dismissed.